Assalamu alaikum. I am Dr. Lodhi Kaneez Fatema, Head of the Department Political Science from J.A.T Arts Science and Commerce College for Women, Malegaon Dist-Nashik. You all are welcome in my video lecture entitled Good Governance. Good governance is one of the topic for the paper of Public Administration to the student of TYBA. Good governance, अच्छा इंतज़ामिया, अच्छा अमला. In 1990s, the World Bank became the first international institution to adopt the concept of good governance. 1990s में World Bank situated at Washington, and the bank is the largest source of financial assistance to the developing countries. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वसीला है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इम्प्रूव करने का. वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ताकि जो है मुल्क जो है तरक्की कर सके. तो पहली दफ़ा 1990s में वर्ल्ड बैंक बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इनटू लेंडिंग अरेंजमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो तरक्की दे सकें, एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ जनरल पब्लिक. In its 1992 report entitled Governance and Development, the notion of good governance was written as the way in which power is used to regulate the economic and social resources of a country for development. 1992 में जो रिपोर्ट इनकी शाये हुई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के नाम से, उसकी राय ये थी कि गुड गवर्नेंस जो है जिसमें इकोनॉमिक और सोशल पावर को यूज़ किया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. नाउ द टर्म गुड गवर्नेंस हैज़ ऑफन बीन used by national and international organization. अभी ये टर्म गुड गवर्नेंस नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है. दैट गुड गवर्नेंस एम टू मिनिमाइज करप्शन. व्हाट इज़ द एम ऑफ गुड गवर्नेंस? अच्छी इंतज़ामिया का मकसद क्या है? अच्छा नज़्म चलाने वाले क्या चाहते हैं कि उनके मुल्कों में मिनिमाइज़ करप्शन को किया जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए. टेक इनटू अकाउंट द ओपिनियंस ऑफ द माइनॉरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए. माइनॉरिटीज़ जो कि अलग थलग ग्रुप रहता है, डिसएडवांटेज ग्रुप रहता है, उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाए. जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप रहता है उनको उनकी कदर की जाए, उनके ओपिनियन को माना जाए. लिसन द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस पीपल, दबे हुए कुचले हुए जो लोग हैं उनकी आवाज़ को भी सुना जाए. उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लाया जाए, यानी कि उनके भी फैसलों को हुकूमत के फ़ैसलों में शामिल किया जाए. एंड रिस्पॉन्ड एक्टिवली to the needs of the community now and in the future. There are 8 principles of good governance. Good governance के 8 उसूल हैं. Number 1, participation. Number 2, rule of law. Number 3, transparency. Number 4, responsiveness. Number 5, consensus oriented
Number 6, equity and inclusiveness. Number 7, effectiveness and efficiency. Last one is accountability. Now we discuss each and every point. Number 1, participation. Participation means हिस्सा लेना. Participation is the concept of good governance. Here is an opportunity for everyone to voice their opinion through institution or representation. अच्छी हुकूमत में पार्टिसिपेशन हर एक को मिलना चाहिए. From top to bottom, each and every person get participation in social, economic and political field. पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट जो है गुड गवर्नेंस के लिए कि हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि जो है वो अपने मसाइल की नुमाइंदगी कर सकें. In addition, everyone without exception has the right to freedom of association and expression. As we all know that our constitution is the best constitution in the world, and according to our constitution we have fundamental rights. In the article 19 we have right to freedom. Freedom also means to form association. हमें जो है तंजीमें बनाने का हक़ है. एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अपने ख़यालात को, अपने तासुरात को पेश करने का हक़ है. और जो है हर कोई अखबारों में लिख सकता है, रिसालों में लिख सकता है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है मास मीडिया के ज़रिए. Second principle of good governance is rule of law. Rule of law means each and everybody is equal before the eyes of law, and there is no discrimination on the basis of caste, color, creed, race, religion, language, sex and status. And nobody is above the law. To implement good governance, the legal framework in the country must be enforced impartially. गैर जानिबदाराना तौर से लीगल फ्रेम होना चाहिए. सबके लिए कानून एक जैसा हो तो गुड गवर्नेंस है. स्पेशली कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स लॉ, ख़ास करके ह्यूमन राइट्स लॉ, इंसानी हुकूक सबको बराबर के मिलने चाहिए. उनके साथ किसी भी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए. जहाँ पर रूल ऑफ लॉ रहेगा अल्टीमेटली वहीं पर गुड गवर्नेंस होगा. नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स that every policy taken and implemented by the government must be carried out under existing regulation. हमारी पॉलिसीज़, मुल्क की पॉलिसीज़ साफ़ और शफाफ होनी चाहिए. हर पॉलिसी को अच्छी तरीके से अमल में लाने के लिए अच्छा आमला होना चाहिए. और जो है इन आमला जो है किसी के साथ कोई भी किस्म की तफरीक न करें. In addition, there must be a guarantee that any information related to the policy can be accessed by everyone. हिंदुस्तान के हर फ़र्द को पॉलिसी के बारे में इल्म होना चाहिए. हमारा मुल्क किस मुल्क से ताल्लुक़ रख रहा है, किस मुल्क से ताल्लुक़ क़ता कर रहा है, किस तरीके से हमारे जो है फ्रेंडली रिलेशंस हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या है, हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, हर एक की मालूमात
सबको होना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पॉलिसी। खासकर जो डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं पॉलिसी से, उनको भी तमाम मालूमात होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, साफ और शफाफ रहना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसी वक्त हम कहेंगे कि गुड गवर्नेंस है। फोर्थ प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिवनेस, जिम्मेदार। गुड गवर्नेंस मीन्स each and every person is responsible. All government officer should be responsible for each and every action. Good governance needs institution and process to attempt to serve all stakeholders within a reasonable time. Thank you very much for listening this video. This is the first part of good governance. In my next lecture, I will explain the other principle of good governance. Thank you very much.